Hey, good evening, my friends. How are you? I hope you are all doing great. And today, welcome to another session of Paytm Money Talk today. I'm Neeraj Gogoi, your host for the talk. And the topic today is passive investing through indices. And what we are going to talk about, we're going to talk about what passive investing is all about, how it is different from active investing, how you can, passively invest through mutual funds, ETFs, and so many different things. And before I start, very quickly, I would like to tell you once again, in True Paytm Money Talk, we try to, consistently get, new experts, strategists, market analysts, and fund managers, so that you can continuously upgrade your knowledge about investing. Also, I'd like to tell you that this talk is powered by Paytm Money. Okay, with me today, I have Mr. Sharwan Goyal. He's a fund manager of UTI. And let me introduce him. He is a CFA, MMS, and he began his career in UTI in 2006. So he has got a solid 15 plus years of experience in the market with respect to fund management, with respect to risk management, and also in the research. So it's a great pleasure to have Sharwan today. Sharwan, welcome onto the stage. Welcome to the show. Thank you, Neeraj. Thank you, Great. Neeraj. Wonderful. So, Shravan, as you were part of this show before as well, and we always used to talk about some new theme, new topic. And today, our topic for discussion is passive investing and through mutual funds and ETFs. But before that, we have got a small section that is called, market update. So I'm going to ask you, how do you think about the market? How do you think, so many things are happening, geopolitics, macros, global, domestic. How does it look? 2023, we are almost at the end. Then we have got 2024. So as a whole, दो चीजें एक है कि how do you think about the market? How do you think about the economy? And how do you think the investors should take care of during this period? Sure. Thank you, Neeraj. It had been always nice to interacting with you on various facets of investing. And current year 2013, it's about to end, and this has been a phenomenal year. We have seen Yes. uh, market starting on a high, and then we seeing a lot of volatility during the year, mainly because of geopolitical risk of US heading towards recession. But Hmm. Indian markets have been pretty solid throughout the year. We have Hmm. witnessed some bit of volatility, but on relative basis, Indian markets have been performing far better as compared to other developed markets. Mainly because most of the macroeconomic parameters are very well placed in India. So we are far better placed as compared to any other market. We are seeing that uh, elevated inflation and high interest rate is resulting into growth challenges in US and other European markets, and we are seeing that geopolitical risk is also impacting most of the developed markets, mainly because the initially US Hmm. Russia Ukraine crisis started impacting energy prices. So from geopolitical risk perspective, in the sense there is no direct linkages of India in these geopolitical risk scenarios, but indirectly these could lead to elevated fuel prices. So from, as all of us are aware that India is a very big importer of fuel, so from that Crude oil. perspective these geopolitical risks could impact India as well. But from Hmm. broad fundamental perspective, India is far better placed as compared to any other markets, be it US, Europe, or any other developing countries. So we have been in far better place on relative basis. हम लोग का काफी सारे दर्शकों ने रिक्वेस्ट किया है कि हम लोग हिंदी में भी बोल सकते हैं. सो Sure. यस, तो देखा जाए तो हम लोग का काफी स्टेबल है. हम लोग बहुत बेटर ऑफ है
काफी सारे वेस्टर्न इकोनॉमी से, एंड हम लोग को मार्केट भी अच्छा लग रहा है दिस पॉइंट ऑफ टाइम, है ना? So, market generally longer term में market earnings का in the sense slave होता है, because generally we have हम्म seen that uh, from a longer term perspective, whatever corporate India is generating in terms of profit growth, generally market sessions are more or less in line with that. And हम्म post COVID, we have seen phenomenal recovery in earnings growth. So from 2012 13 to all the way to 2020, we have seen that earnings was slight laggard, because we हम्म have seen Nifty earnings growth hovering between 6 to 8% range prior to COVID. But post COVID, we have seen that because of macroeconomic recovery, FY20 earnings growth was 40%, and thereafter also we have seen that earnings have remained stable in last 2 3 years. And next 2 years also, most of the analysts are estimating mid-teens kind of earnings growth. So these geopolitical risks are generally already priced in. Whatever is known is already priced in the market, and it's always difficult to price in unknown in the sense things करेक्ट. which we don't know, which we don't know. So from that perspective, one should not put too much हम्म emphasis on the geopolitical risk, because from longer term equity investing perspective, market would always deliver returns in line with earnings growth. बहुत बढ़िया. अच्छा, नाउ हम लोग इन्वेस्टिंग स्टाइल में बात करते हैं. अभी देखिए, पैसिव इन्वेस्टिंग एंड एक्टिव इन्वेस्टिंग ये एक डिबेट है, एंड ऑफ लेट पैसिव इन्वेस्टिंग जो है इट्स पिकिंग अप, बहुत मोमेंटम पिकअप कर रहा है. लॉट्स ऑफ एक्साइटमेंट हो रहा है. लोग, पीपल आर शिफ्टिंग एक्चुअली. काफी सारे लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और नेक्स्ट निफ्टी, नेक्स्ट 50, ये सारा इंडाइसेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं. सो आपको क्यों लग रहा है कि व्हाई इतना एक्साइटमेंट है और धीरे धीरे से लोग शिफ्ट कर रहे हैं पैसिव इन्वेस्टिंग की तरफ? व्हाट आर द मेन रीजन, की कारण क्या है? Sure. See, just to give you background, passive हम्म. investing is not new हाँ. to India as well as श्रवण globally जी, as well. अगर आप थोड़ा हिंदी में भी बोलेंगे तो अच्छा होगा. Sure. हम लोग का दो, ओके हाँ. ओके श्योर हाँ जी. नहीं. सो हमने देखा कि डेवलप मार्केट जैसे यूएस और यूरोप में पैसिव इन्वेस्टिंग करीब करीब 20 से 30 साल पहले स्टार्ट हुआ था, हाँ जी. राइट? द रीजन फॉर पैसिव इन्वेस्टिंग पिकिंग इन यूएस 20 30 years बैक वाज, उस टाइम पे एक्टिव फंड्स जो थे उनका कंसिस्टेंट हम्म परफॉर्मेंस नहीं था, एंड इन पैसिव फंड्स का जो कॉस्ट होता है वो फ्रैक्शनल होता है एज कंपेयर टू एक्टिव फंड्स. और ये हम्म रीजन की वजह से ग्लोबल मार्केट्स में, स्पेशली यूएस मार्केट में, पैसिव फंड्स हैव बिकम बिगर देन एक्टिव फंड्स इन टर्म्स ऑफ साइज, राइट? हम्म इंडिया में भी हमने देखा है कि करीब करीब लास्ट 8 से 10 साल पहले पैसिव स्टार्टेड पिकिंग अप इन अ बिग वे. सो पैसिव राइट. साइज ऑफ पैसिव फंड वाज just about 1% of mutual fund industry's AUM 8 years back, and in हाँ हाँ. 8 years it has grown 50x, and it has become 16% of mutual fund industry's AUM. So mainly वाओ. because uh, retirement funds led by EPFO और दूसरे सब investors में भी wealth platforms ने has also started advocating passive funds in a big way. And हम्म these are, I would say, for a new investor, first time investor, जब आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करते हैं तो पैसिव फंड्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बिकॉज करेक्ट. पैसिव फंड एक आम इन्वेस्टर के लिए समझने में बहुत इजी होता है. बिकॉज हम्म जैसे हम और आप जान रहे हैं कि निफ्टी और सेंसेक्स ये हम डेली मार्केट में सुनते हैं. सो हम्म पैसिव फंड्स आपको जो रिटर्न्स देगा वो अंडरलाइंग इंडेक्स के बराबर रिटर्न देगा. अगर आप निफ्टी बेस्ड बिल्कुल. इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपका रिटर्न्स निफ्टी के आसपास होगा, सब्जेक्ट टू एक्सपेंस रेशियो एंड ट्रैकिंग एरर. सो हम्म ये सब जो ब्रॉड मार्केट कैप बेस्ड इंडेक्स है ये इजीली अंडरस्टूड है मार्केट पार्टिसिपेंट्स को. हम्म हम्म अगर आप एक्टिव फंड बात करेंगे तो देर आर lot of choices, and generally we have seen that investors are getting lost in lot of in the sense options. So आप हम्म जब न्यू इन्वेस्टर्स के लिए एक इजी स्टार्ट करने के लिए मार्केट में निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी नेक्स्ट 50, ये सब इंडेक्स फंड या ईटीएफ के थ्रू आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं. सो आपको एक इजी प्लेटफॉर्म मिलता है अपना इन्वेस्टमेंट करियर, इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने के लिए. बहुत बढ़िया. तो एक्चुअली हम लोग का जो आज ब्रेथ ऑफ द टॉपिक है ना, काफी बड़ा है, क्योंकि हमको म्यूचुअल फंड भी डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग ईटीएफ भी डिस्कस करेंगे, एंड हम लोग और एक थोड़ा बहुत स्मार्ट बिट ईटीएफ का भी ऊपर डिस्कस करेंगे, राइट? तो मेरे ख्याल से काफी सारे लोग ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. आई कैन सी क्वेश्चंस फ्रॉम विक्रम प्रभु, एज मिस्टर भूपेंद्र सिंह, मिस्टर अमित. सो सब लोग को मैं
रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका क्वेश्चंस का आंसर्स आ रहे हैं, बट बिफोर दिट सरवान जी ने एक बहुत बढ़िया सुंदर सा पीपीटी प्रेजेंट प्रिपेयर किए हैं, सो दैट वी कैन गो डीप डाइव इनटू द होल थिंग, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से, जो प्रोज एंड कॉन्स है वो समझे. So Sarwan ji, if you can, share your presentation, that would Sure. be lovely. Yeah. Okay, you can start the PPT. Just a second. Mhm. Right. So as I was referring, we have seen phenomenal growth in passive funds in India in last 8 years. जैसे कि मैं Right. बता रहा था कि पैसिव फंड्स का जो साइज था इंडिया में, एक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का 1% था मार्च 2015 में, और Mm-hmm. लास्ट 8 years में इट हैज बिकम 16% ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज एयूएम. And in terms of absolute size, it was just about 14,000 crore in March 2015, and in 8.5 years, it has grown 50x to more than 7 lakh crore. So जो ये growth है, phenomenal growth, ये this was started because EPFO started investing 5% of annual accretion in passive funds, right? But we have seen that incrementally last few years में lot of wealth platforms, lot of fintech platforms such as yours are advocating simple to understand passive funds, or because of uh, uh, simple to understand solutions, and in the sense because of simplicity of passive funds, a lot of new generation investors have also started investing in passive funds. And because of these merits, we have seen that passive funds have become very popular among majority of us, investors, be it retail investors, HRI investors, new age investors, or even institutional investors are also investing in these passive funds in a big way. Moving on. So these are some of the benefits of passive funds. As I rightly mentioned, these are simple yet effective investment solution. जब आप निफ्टी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता होता है कि ये निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज जो एनएससी में लिस्टेड होता है, these 50 companies are largest and most liquid companies traded for very long period of time, right? So एक आपको लार्ज कैप का स्ट्रॉन्ग बेस मिलता है, एक लॉन्गर टर्म हिस्ट्री मिलता है. सो जब आप दीज 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आपको एक जस्ट निफ्टी इंडेक्स फंड या निफ्टी ईटीएफ के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. और जनरली इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल जो रिक्वायर्ड होता है इन्वेस्टिंग का, वो रिलेटिवली लेस होता है पैसिव फंड्स में, बिकॉज जनरली वी नो दैट निफ्टी सेंसेक्स आर टॉप 30 टॉप 50 कंपनीज ट्रेडेड ऑन बीएसई एंड एनएससी स्टॉक एक्सचेंज. सेकेंड जो बेनिफिट है, लोअर कॉस्ट है. So passive funds are available at fractional cost of active funds. So typically expense ratio of ETF could be 5 to 20 basis point. Index fund also could be between 20 basis point or slightly higher than that. So these funds are available at fractional cost as compared to active funds. Typically expense ratio for active fund is 1.5-2% for, I'm talking about pure equity oriented active funds. So passive funds are available at low cost. So generally money saved is money earned. So if you are able to invest at lower cost, so typically in the long run, because of beauty of compounding, your returns could be higher if you are able to generate better returns. Third, generally active fund managers invest based on certain philosophy, they follow certain styles, and those styles may or may not work out all the time, right? So because of this, we have seen that active funds could face systemic market risk, and there could be wide variation in active funds performance as compared to broader market indices. While जनरली आप देखेंगे कि पैसिव फंड्स का जो परफॉर्मेंस होता है अंडरलाइंग इंडेक्स के आसपास होता है, बिकॉज ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी पैसिव फंड इज टू जनरेट रिटर्न्स आर returns very close to the benchmark return, so subject to either expense ratio or tracking error. Fourth, mutual fund is the best and simplest way to invest in equity markets, because generally mutual fund schemes are tax exempt, which means that whenever mutual fund schemes are booking profits either through short term capital gain, long term capital gain, or whenever mutual fund schemes are receiving dividend from the companies, these taxes are deferred till the time investors is remaining invested in the स्कीम. सो फॉर एग्जांपल, अगर कोई इन्वेस्टर किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करता है और 10 साल तक उसमें इन्वेस्टेड रहता है, तो इस 10 साल पीरियड में इन्वेस्टर्स को कोई भी टैक्स इंसिडेंस नहीं आता है. और जब अल्टीमेटली इन्वेस्टर 10 साल के बाद प्रॉफिट बुक करता है, 5 साल के बाद प्रॉफिट बुक करता है, तो उस टाइम पे उसको 10% कैपिटल गेन पे टैक्स पे करना पड़ता है फॉर इक्विटी ओरिएंटेड ETF और इक्विटी ओरिएंटेड इंडेक्स फंड. सो म्यूचुअल फंड इज अ टैक्स एफिशिएंट वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन इक्विटी मार्केट्स. मूविंग ऑन. So generally people ask which are the criterias I should be aware whenever I am investing in either index fund or ETF. So the
the left hand side three criteria which are one of the most important criteria for investing in index fund. First and foremost, total expense ratio, which is cost. But generally, we put a lot of emphasis only on cost. So cost is important, but apart from cost, you should be tracking other data such as tracking error of the fund. So, since objective of passive fund is to replicate the benchmark, and funds which are able to efficiently replicate the benchmark are having low tracking error, right? So, which means that जब भी आप किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं, आपका एंड ऑब्जेक्टिव होता है कि मेरा रिटर्न इंडेक्स के आसपास हो. सो जो फंड्स जिनका ट्रैकिंग एरर जितना लो होगा, उनका रिटर्न्स उतना बेंचमार्क के आसपास होता है. So ideally, apart from cost, which is total expense ratio, you should be looking at funds which are having low tracking error. Third is size of the fund. Typically, funds which are having large size because uh, the volatility of inflow and outflow, impact of volatility of inflow and outflow is much lesser for funds which are having larger in size. So within index fund, you should be looking at funds which are having decent size. You should not be investing in a fund which is having very small size because execution cost is borne by the fund. Any volatility in inflow and outflow in the fund could impact the fund performance as well. So that's why you should be looking at funds which are having low expense ratio, low tracking error, and higher size, right? But whenever you are investing in ETF, apart from these three metrics, which is cost, tracking error, and size, you should also be looking at bid ask spread because uh, जब आप ETF में इन्वेस्ट करते हो तो आप जनरली the way you are investing in any stocks in similar fashion you are investing in ETF. So you should be looking at bid ask spread while investing in any ETF. And fourth and foremost, trading cost because uh, the overall ownership cost of investing in ETF is apart from expense ratio charged by the AMCs, whatever you are paying to the uh, your broker through demat charges or brokerage charges. So you should be aware about the overall of cost of ownership whenever you are investing in ETFs. Moving on. Moving on to smart beta funds, we can move on. Next slide, please. So smart beta are enhanced index strategies wherein objective of any smart beta fund is to generate better returns or lower volatility depending upon which factor you are choosing. For example, if you are investing in low volatility strategy, then your objective is to generate returns which are least volatile as compared to other factors. Similarly, whenever you are investing in quality oriented style, then your objective is to generate then your objective is to invest in companies which are having better quality in terms of return on equity, debt to equity ratio, or based on various quality parameters. So, apart from broad market cap based indices such as Nifty, Sensex, Nifty Next 50, जहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन होता है वो साइज ऑफ द कंपनी के बेसिस होता है. जैसे निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज होती है, निफ्टी नेक्स्ट 50 में उनके निफ्टी के बाद वाली 50 कंपनी होती है जो कि लार्जेस्ट इन साइज होती है. सिमिलरली मिड कैप ओरिएंटेड फंड्स में जो मिड कैप जो यूनिवर्स होता है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. बट स्मार्ट बीटा फंड में साइज के बेसिस पे स्टॉक सिलेक्शन नहीं होता है. स्मार्ट बीटा फंड्स में स्टॉक सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर फैक्टर. So there could be two types of factor from broader perspective. Factors could be based on fundamental basis, which is quality, value, the way analysts and fund managers are selecting companies based on these attributes. Or factors could be based on market factors such as momentum, low volatility, wherein objective is to choose companies based on their price performance or volatility of the stock price. We are not looking at underlying fundamental attributes of those companies for these market oriented factors. So these are the broader smart beta strategies or options available to the market to the investors whenever you are investing in smart beta strategies. Moving on. So here we have listed key smart beta strategies. So momentum is slightly aggressive investment style, wherein objective is to pick stocks which have performed far better as compared to any other stocks. So here, in case of momentum, idea is to buy stocks which have performed relatively better in the assumption that the momentum will continue going forward and stocks which have worked very well in the recent past will continue to perform well going forward as well. So that's the objective of momentum strategy. Mhm. Volatility is just opposite of momentum, wherein stocks are selected based on volatility of those stock prices. So जो volatility होता है इसमें stocks जिनका volatility कम होता है. So last 1 year का standard deviation देखते हैं हम,
जो स्टॉक प्राइसेस का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है वो कंपनीज को चूज किया जाता है लो वोलेटिलिटी स्ट्रेटजी में। और ऑब्जेक्टिव लो वोलेटिलिटी स्ट्रेटजी का होता है कि आपको रिस्क एडजस्टेड बेसिस पे बेटर रिटर्न्स प्रोवाइड करे लॉन्ग टर्म में। बिकॉज जनरली जो कंपनीज लो वोलेटाइल होती है जनरली उनका बिजनेस मॉडल भी काफी स्टेबल होता है, और स्टेबल बिजनेस मॉडल की वजह से ही उनका स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस स्टेबल होता है। सो जनरली फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टर जो स्लाइटली रिस्क अवर्स होते हैं उनके लो वोल स्ट्रेटजी एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। Third, quality and value. These are fundamental oriented factors. Generally, हम human being generally either value oriented हो सकते हैं या quality oriented हो सकते हैं. So आप you can study these styles and based on your understanding, your thought process, आप क्वालिटी ओरिएंटेड स्ट्रेटजी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वैल्यू ओरिएंटेड स्ट्रेटजी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया क्वालिटी ओरिएंटेड स्टाइल में हाई क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है, बिकॉज जनरली जो कंपनीज हाई क्वालिटी होती है उनका रिटर्न ऑन इक्विटी बेटर होता है, उनका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बेटर होता है, उनका बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग होता है और लॉन्ग टर्म में ये कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती है। जबकि इन्वेस्टर्स जो वैल्यू ओरिएंटेड होते हैं, जिनको चीपर प्रोडक्ट बाई करने की आदत होती है, तो वो वैसे इन्वेस्टर्स जो जिनका माइंडसेट एंड फिलोसफी वैल्यू ओरिएंटेड होता है वो वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में कंपनी जो रिलेटिवली लेसर प्राइस टू अर्निंग्स, प्राइस टू बुक वैल्यू और रिलेटिव बेसिस पे जो लोअर वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है वैसे कंपनीज को चूज किया जाता है। सरवन जी, इफ आई अगेन मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहूंगा काफी सारा हम लोग का व्यूअर्स के लिए। तो जो इंडेक्स स्मार्ट बीटा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज है वो भी निफ्टी 50 में ही इन्वेस्ट करते हैं 50, जैसे मोमेंटम में सबसे टॉप 30 स्टॉक्स जिसका मोमेंटम सबसे ज्यादा है वो हम लोग को पिकअप कर लेते हैं। एम आई राइट सर? एंड जैसे क्वालिटी में होगा कि निफ्टी 50 का जो 50 स्टॉक्स है उसका अंदर से 30 सबसे हाई क्वालिटी स्टॉक्स उनको हम पकड़ लेते हैं। एंड सिमिलरली वैल्यू भी वैसे ही होता है। सो इसका मतलब कि इंडेक्स को अंदर भी वी आर सिलेक्टिव इन चूजिंग द स्टॉक्स, है ना? करेक्ट। सो जस्ट वन माइनर करेक्शन। सो मोमेंटम जो मार्केट में स्टाइल्स अवेलेबल है वो निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स है सपोज, उसमें टॉप 30 हाई मोमेंटम कंपनीज टॉप 200 कंपनीज में से सेलेक्ट किया जाते हैं। टॉप 200 यूनिवर्सिटीज टॉप 200। सिमिलरली क्वालिटी में भी टॉप 100 से में भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, टॉप 200 में भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सो बिल्कुल जो इंडेक्स का नाम है वो आपको बताएगा कि कितने कंपनीज में कितने कंपनी सेलेक्ट किया जाता है। सो बिल्कुल वहां पे दो नंबर होता है। फंडामेंटल डिफरेंस इज निफ्टी और सेंसेक्स, निफ्टी नेक्स्ट 50, ये सब इंडेक्स में साइज के बेसिस पे कंपनीज का सिलेक्शन होता है। जैसे निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज जिनका मार्केट कैप फ्री फ्लोट मार्केट कैप के बेसिस पे टॉप 50 कंपनीज होता है, वो सब कंपनी सेलेक्ट किया जाता है। तो जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो साइज ऑफ द कंपनी है। जबकि स्मार्ट बीटा फंड में फैक्टर के बेसिस पे वो कंपनी सेलेक्ट किया जाता है। मोमेंटम में जिस कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है वो कंपनी सेलेक्ट की जाती है। लो वॉलेटिलिटी स्ट्रेटजी में जो कंपनीज का वॉलेटिलिटी सबसे कम होता है वैसी कंपनी सेलेक्ट की जाती है। क्वालिटी में क्वालिटी ओरिएंटेड फैक्टर्स के बेसिस पे कंपनी सेलेक्ट की जा सकती है। फॉर एग्जांपल मिड कैप सेगमेंट में क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। सो वी हैव यूटीआई निफ्टी मिड कैप 150 क्वालिटी 50 इंडेक्स, जहां की हम 50 हाई क्वालिटी कंपनीज मिड कैप यूनिवर्स में सेलेक्ट करते हैं। सो रिलेटिव बेसिस पे जो क्वालिटी फैक्टर है मिड एंड स्मॉल कैप में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कंपेयर टू लार्ज कैप, बिकॉज मिड कैप कंपनीज आर नॉट वेरी वेल रिसर्च। सो जो रिटर्न ऑन इक्विटी, फाइनेंशियल लिवरेज और ईपीएस ग्रोथ वेरिएबिलिटी के बेसिस पे हम हाई क्वालिटी कंपनी सेलेक्ट करते हैं। बिल्कुल, हाँ जी। So here we have shown performance of various smart beta strategies since inception, right? So जो निफ्टी ने 2005 से ये स्मार्ट बीटा स्ट्रेटजीज का डेटा अवेलेबल है, निफ्टी बेस्ड स्मार्ट बीटा स्ट्रेटजीज का। सो जो निफ्टी 50 इंडेक्स ने 14.3% कैगर रिटर्न दिया है लास्ट 18 इयर्स में विद 21.6% वॉलेटिलिटी। जबकि जो वैल्यू इंडेक्स है उसने 15.3% रिटर्न दिया है। First and foremost, all these smart beta strategies have outperformed Nifty in last 18 years since inception. So value ने 15.3% रिटर्न दिया है, जबकि volatility value स्टाइल का बहुत हाई है। जनरली वैल्यू इज अ हाई वॉलेटाइल स्ट्रेटजी। थर्ड जो स्टाइल है बॉटम से वो है निफ्टी 100 लो वॉल, जिसने 17.7% रिटर्न दिया है, बट वॉलेटिलिटी काफी लो है 17.5। सो अमंग दीज 5 स्टाइल्स वॉलेटिलिटी जो है लो वॉलेटिलिटी स्टाइल्स का सबसे लोएस्ट वॉलेटिलिटी है।
फिर हमने निफ्टी मिड कैप 150 क्वालिटी 50 इंडेक्स का, जिसका मैंने जिक्र किया अर्लियर स्लाइड में, उसने 19.1% रिटर्न दिया है विद 17.9% वॉलेटिलिटी। सो रिटर्न भी अच्छा है, वॉलेटिलिटी भी लो है। जबकि मोमेंटम ने बेस्ट परफॉर्म किया है 19.6% एनुअलाइज्ड रिटर्न से लास्ट 18 ईयर्स में, बट वॉलेटिलिटी भी स्लाइटली ज्यादा है। So investors can combine one or two or three styles. So for example, combination of momentum and low vol could work very well, because momentum is aggressive investment style, while low vol style protect the downside during difficult market environment. So जो ये दो स्टाइल को आप कंबाइन करके लॉन्गर टर्म में you can generate good returns. बहुत बढ़िया। So we at UTI are offering wide bouquet of products. So in a sense, we have almost 18 to 20 products across equity, fixed income, and commodities. So it's not that passive funds are only available for equity investing, right? Passive funds are available for fixed income as well as commodity-based ETF and index funds. So for example, in commodities, we have gold and silver-based ETF as well as ETF fund of fund. Similarly, on debt side, we have various maturity-oriented debt funds. And within equity also, we have market cap-based funds. I've referred Nifty, Nifty Next 50, Sensex, these kind of index fund. But apart from these plain vanilla market cap-based index fund, we have also launched smart beta strategies, which are based on momentum, low vol, quality, value, or equal weight. Equal weight could be simplest smart beta strategies, because in case of Nifty 50 equal weight index fund, equal weight is given to all 50 companies which are part of Nifty. Similarly, on ETF platform also we have various market cap oriented and thematic funds. The smart beta funds, probably we believe that index fund could be simpler route to invest in these smart beta funds, because secondary market liquidity plays very big role for ETF investing. And in a sense, India is a nascent stage in terms of secondary market liquidity. It's picking up beautifully in last few years, but still it is much lower than developed markets. So that's why we have preferred to have smart beta funds under index fund platform. Thank you. अच्छा सरवण जी, मेरा एक क्वेश्चन है। आपने तो काफी सारे एक्साइटिंग, जो आउट ऑफ ऑल द फंड्स है, जो मुझे सबसे एक्साइटिंग लग रहा है इज स्मार्ट बीटा, लास्ट वाला। ऑफ कोर्स वी हैव, हम लोग को काफी सारे क्वेश्चंस मिले हैं नाउ, उसका बाद हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस लेंगे। बट एक बात बताइए कि अभी देखिए हम लोग का मिड कैप स्मॉल कैप अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आगे जाके एवरीबॉडी इज बुलिश फॉर नेक्स्ट 10 years कि इंडियन इकोनॉमी, जैसे आपने भी कहा है कि इंडियन इकोनॉमी इज पॉइज्ड फॉर ए वेरी गुड ग्रोथ, मार्केट इज पॉइज्ड फॉर ए बुल रन। तो इस सिचुएशन में हम लोग को कहाँ पे एग्जैक्टली इन्वेस्ट करना चाहिए? शुड वी गो फॉर ए प्लेन इंडेक्स फंड जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50, और एक स्मार्ट बीटा फंड? और स्मार्ट बीटा में भी मोमेंटम, वैल्यू, अलग अलग फंड्स है, क्वालिटी, तो कहाँ पे यू थिंक इज द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट? Sure. See, first and foremost, the first time investors should always start with plain vanilla market cap oriented funds, जैसे कि Nifty, Sensex, Nifty Next 50, right? And core part of your portfolio should be in these market cap oriented funds, such as Nifty, Sensex, Nifty Next 50, these kind of funds. And on relative basis, as you rightly referred, that mid cap और small cap में बहुत strong rally हुआ है last 2-3 साल में. See, generally we have seen that market has tendency to revert back to mean valuation. So जब एक particular segment market काफी ज्यादा strong performance दे देता है 2-3 साल 4 साल, उसके बाद generally other segment of the market starts performing well. So on relative basis, we believe that Nifty or large caps are far better placed, because Nifty is trading at fair valuation zone, while because of very strong rally mid cap और small cap segment है market का, वो slightly expensive valuation territory में trade कर रहा है. Just to give you a couple of data points, typically in the long run, both Nifty and mid cap index on an average trades at similar valuation in terms of 1 year forward period. But because of very strong rally in last couple of years, currently mid caps are trading at 20% premium as compared to Nifty, right? जनरली वी हैव सीन दैट जब मार्केट में मैक्रो इकोनॉमिक रिकवरी होता है, उस फेज में मिड एंड स्मॉल कैप सेगमेंट ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, बट जनरली मार्केट डिफरेंट दौर से गुजरता रहता है. सो वी बिलीव दैट
a large part of your investment should be in large cap oriented funds now, mainly because large caps are much better placed in terms of valuations, and long term market is slave to these valuations and earnings growth. So on relative basis, we have सही much है। more comfort in large cap as compared to mid and small cap. हम्म। चलिए, हम लोग ने And लार्ज कैप चूज कर लिया। नाउ लार्ज कैप का अंदर भी एनी स्पेसिफिक थीम, जैसे आप वैल्यू, ग्रोथ, मोमेंटम, क्वालिटी? right. So once you decide on your core part of the portfolio, which is Nifty, Next 50, Sensex, these kind of indices, index-based हाँ जी। ETF or index fund, satellite could be in certain thematic funds. If you believe that certain themes or sectors are going to do well or going to हम्म। perform well in next 2 3 years, you can have some allocation to certain themes or sector-oriented ETF or index fund. And then coming back to smart beta strategies, one should start with lower allocation to smart beta strategies. As you understand the intricacies of these smart beta strategies, you can हम्म। gradually keep reviewing your allocation towards these smart beta strategies. So typically we बिल्कुल। advise people to start with 10-20% kind of allocation to these smart beta strategies. So on relative basis, momentum factor has generated on in a sense much stable returns in the long run, apart from value low vol strategy. हम्म। So we believe that हम्म। one can combine these two styles, momentum and low vol, because these two styles are हम्म। complementing each other. Momentum जो है वो slightly aggressive investment style है, based on the thesis that जो कंपनी जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है रिसेंट पास्ट में, वो आगे आने वाले हम्म। टाइम में भी अच्छा परफॉर्म करेगा. जनरली बिल्कुल। मैक्रो इकोनॉमिक एक्सपेंशन फेज में मोमेंटम ओरिएंटेड स्ट्रेटजी काफी अच्छा परफॉर्म करता है, एंड जनरली वॉलेटाइल मार्केट एनवायरनमेंट में लो वॉल स्ट्रेटजी कुड आल्सो परफॉर्म वेल. So one can combine one or two investment styles. So my हम्म। advice at this point in time could be you can combine either momentum or low vol, or quality as a segment has underperformed drastically in last 2 3 years. So one should have some allocation to quality oriented factor based strategies as well. So within mid cap and small cap, quality plays far bigger role. So one can choose to invest in mid cap quality oriented strategies as well. चलिए, ठीक है। नाउ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस है, ऑडियंस से, पार्टिसिपेंट्स है। आई थिंक वी शुड स्टार्ट टेकिंग दोस क्वेश्चन। एक भूपेंद्र सिंह, उन्होंने पहले क्वेश्चन पूछा था, कैन यू काइंडली टेल अस हाउ टू इफेक्टिवली इन्वेस्ट इन निफ्टी 50 एंड निफ्टी बीज वाया म्यूचुअल फंड? You mean ETF and index fund? यस। Sure. See, choice of investing in ETF or index funds depends upon overall cost of ownership. जब आप हम्म। ETF और इंडेक्स फंड को इवेलुएट करते हैं तो आपको खाली एक्सपेंस रेशियो का नहीं देखना चाहिए. एक्सपेंस बिल्कुल। रेशियो इज वन पार्ट ऑफ कॉस्ट, राइट? So whenever you are investing in index fund, there is no additional ancillary cost of investing, because investing in index fund is just like any other mutual fund schemes. So जो हम्म। convenience perspective से one can choose to invest in index fund, right? And while evaluating ETFs based on overall cost of ownership, एक्सपेंस रेशियो के साथ साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि आपका डीमेट चार्जेस कितना है, आपका ब्रोकरेज क्या है. बिकॉज जब जब आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि आप जैसे भी कोई भी इन्वेस्टर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकता है, उसी वे में आप ईटीएफ में भी इन्वेस्ट करते हैं, राइट? सो जब आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, तब आपको डीमेट चार्जेस देना पड़ता है. सो इन्वेस्टर्स हु आर well versed with investing in stocks, they could prefer to choose in ETFs. But you should be aware about the bid-ask spread or overall cost of ownership whenever you are investing in ETFs, because ठीक है। in the end, what matters is overall cost of ownership rather than only the total expense ratio charged by the करेक्ट। AMCs. करेक्ट। एक विक्रम प्रभु का क्वेश्चन है, कि उन्होंने पूछा है, डज एएमसी क्रेडिबिलिटी मैटर्स व्हाइल इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स फंड और जस्ट लुकिंग एट द परफॉर्मेंस इज सफिशिएंट? आर देयर एनी चांसेस ऑफ एएमसी गोइंग टू लॉसेस, एंड इज दैट केस व्हाट अबाउट इन्वेस्टर्स मनी? अगर एएमसी लॉस में चले जाते हैं तो इन्वेस्टर्स का पैसा का क्या होगा? So नीरज जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड जो है वो बेस्ट रेगुलेटेड एंटिटी है इंडिया में, because market regulator SEBI is regulating the mutual fund industry, right? So from that perspective, uh, there are various players operating in mutual fund platforms. Apart from mutual fund company, we have registrar and transfer agents, we have custodian who are So, taking care उस of the मैटर में custody of बिल्कुल ही the चिंता नहीं करना है। right, right. So role of AMC whenever you are investing in index fund or ETF is, you should look at
credibility and long-term track record of those ETFs in managing these correct. passive funds, right? Because investing style is very different as compared to active funds in case of passive Hmm. funds. So passive funds requires understanding, in the sense, quantitative understanding of investing. Uh, in the sense, AMC should have systems and processes which could help us in efficient replicating the benchmark. At the same time, there should be a dedicated team which is managing or handling these passive funds, because Hmm. on theoretically it seems easier than actually managing these passive funds. So generally we Hmm. say that managing passive funds, although name suggests passive, but from managing perspective it is pretty active. Passive fund manager needs to take care of various corporate action, because underlying index is a book cricket kind of stuff, in the sense, while actually Okay, managing passive fund requires uh, deep understanding of various corporate actions which are taking place in correct. the investing companies. And whenever the Hmm. index is getting balanced efficiently, we have to rebalance the portfolio as well. So Exactly. funds which are having decent size, uh, Hmm. uh, focused team, as well as long-term track record of efficiently managing funds in terms of tracking error, low tracking error, should be preferred by the investors. एब्सोल्युटली एज यू सेड सुनील सिरोटे का एक क्वेश्चन है कि फिजिकल गोल्ड इज बेटर इन्वेस्टमेंट देन ईटीएफ ऑब्लिक जीएसबी एसजीबी सी जब आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, हम्म सो आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जब जब आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, तब आप ज्वेलर से आप वो गोल्ड खरीदते हैं। सो देयर कुड बी इम्प्योरिटी रिस्क व्हेनेवर यू आर बाइंग एंड सेलिंग दीज गोल्ड। सेकेंड, देयर इज अ risk of theft, because you need to take care of storage cost as well, right? करेक्ट So it would be risk of theft, impurity whenever you are buying and selling these commodities. और उसके साथ साथ जब आप गोल्ड बाई एंड सेल करते हैं, तो आपका जो स्प्रेड है वो बहुत ज्यादा होता है फिजिकल गोल्ड का। So because of these reasons, one should prefer uh, either ETF or SGB route for investing in these पर्टिकुलरली इन द commodities, गोल्ड यस gold and एक silver. Yeah. गौरव मेहता का क्वेश्चन है सर ईटीएफ में बिग लमसम इन्वेस्ट करने से पहले क्या देखना है वो तो आपने बोल चुके हैं ऑलरेडी कि हम लोग को ट्रैकिंग एरर देखना है कि हाउ इट इज टू बी मैनेज लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देख मतलब ट्रैकिंग एरर इन टर्म्स ऑफ एक चीज और बताना चाहूंगा, जब आप इन्वेस्ट हाँ ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, सो आपको जो INAV, म्यूचुअल फंड वेबसाइट पे आप INAV देख सकते हैं कि हाँ एक्चुअल वैल्यू क्या होना चाहिए वो ईटीएफ का, जब आप बाय एंड सेल करते हैं ईटीएफ का। फिर देन हम्म आप चेक कर सकते हैं कि एक्चुअल में आप क्या प्राइस पे बाय एंड सेल करते हैं। सो INAV कुड हेल्प यू टेकिंग बेटर कॉल, बेटर इन्वेस्टिंग इन ईटीएफ्स। ईटीएफ ये आईएनएवी होता क्या है सरवन जी राइट। सो जैसे म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती है, इंडेक्स फंड या फिर हम्म एक्टिव फंड्स। सो म्यूचुअल फंड डे एंड पे एनएवी डिक्लेयर करता है, जो कि करेक्ट ट्रू वैल्यू होता है वो असेट्स का, राइट? सो इन INAV, जो जिस पॉइंट पे जब मार्केट में आप ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स यू आर बाइंग सेलिंग दीज ETFs, सो जो अंडरलाइंग स्टॉक्स होता है ETF में, उनका हम्म एग्रीगेट वैल्यू के बेसिस पे उस टाइम पे क्या एक्चुअल प्राइस होना चाहिए वो डिटरमाइन होता है। जबकि आप ETF बाय एंड सेलिंग करते हैं मार्केट में, तो थोड़ा स्प्रेड होता है, बिकॉज दैट इज कॉल्ड इम्पैक्ट कॉस्ट, बिकॉज ETF is nothing but it is providing platform to various investors to buy and sell ETF units, and there is करेक्ट some impact cost as compared to actual value of the ETF. So INAV shows you the actual value of those ETF at that point in time. So you can refer to आई mutual सी fund websites and get to know what is the true value of this ETF at this point in time. And then based on that, you can buy and sell those ETFs in अच्छा cyclical ये mode. लाइव अपडेट होता है आईएनएवी मतलब इट्स Yes, कंप्लीटली सपोज yes. मार्केट इज एक्सट्रीमली वॉलेटाइल बहुत नीचे क्रैश हो रहा है और बहुत ऊपर जा रहा है एंड एट द रियल टाइम दे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आईएनएवी It is getting updated in few seconds. Yes, 5-10 seconds. फ्यू Something like that. सेकंड्स ओके वंडरफुल एक विक्रम प्रभु का क्वेश्चन है पैसिव फंड्स फॉलोज व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टाइल ग्रोथ वैल्यू और मोमेंटम तो हाँ So there are various styles. So just like active funds, wherein they invest in either quality, value, momentum, these smart beta funds offer you various styles, and you हम्म can choose either quality, value, momentum.
there are various smart beta strategies which are available in the marketplace. So you can choose to invest in a particular smart beta strategy. So Okay. passive funds, just like active funds, are offering various smart beta strategies. ओके एक शुभम गार्ग का क्वेश्चन है सर स्मार्ट बेटा फंड बेस्ड ऑन निफ्टी 50 स्टॉक्स बेटर ऑप्शन फॉर गुड रिटर्न देन स्मॉल कैप इंडाइसेस काफी सारे आजकल लोग स्मॉल कैप में एक्साइटेड हैं सो आपने एक्चुअली ये बहुत अच्छा लॉजिक ये बताए थे आपने बट आई थिंक दिस पॉइंट यू शुड रिपीट Sure. अगेन So typically, as I mentioned earlier, smart beta जी strategies are selecting stocks from parent index. The parent index could be Nifty, Nifty 100, Nifty 200, Nifty 500, right? So for example, most of the smart beta funds are based on broader universe, say Nifty 200 index. So करेक्ट the parent index is broader because we need number of companies to select companies. Selecting 30 companies from 50 companies may not give us very strong momentum or very quality or value oriented side, right? So that's why typically the universe is slightly bigger, say Nifty 200. So in case of Nifty 200 momentum 30 index fund, 30 high momentum companies are selected from the broad universe of Nifty 200 index. वेरी गुड अच्छा टेक्निकली मैं और एक पूछना चाहूंगा मान लीजिए निफ्टी 250 निफ्टी 30 200 मतलब 30 Correct. कंपनी 200 से चूज करना है ना ये जो Correct. 30 कंपनी देयर वेटेज फंड में इक्वल रहता है मार्केट कैप रिलेटेड होता है हाउ हाउ मच ऑफ वेटेज इज गिवन टू इंडिविजुअल स्टॉक्स इन द Sure. स्मार्ट बेटा So let me step back and explain you the thought process or selecting mechanism for momentum strategy for the time being, right? करेक्ट So as I referred earlier, momentum is based on the hypothesis that stocks which are doing well in recent past will continue to do well. So which means market is a trending market, and a trending market, whichever segment of the market is doing better, will continue to well going forward as well, right? So उस basis पे stocks जिन्होंने 30 high momentum stocks based on last 6 month and 1 year returns. So Nifty 200 index में से जो कंपनीज डेरिवेटिव्स में नहीं है वो हटा दी जाती है और जो कंपनीज डेरिवेटिव्स सेगमेंट का पार्ट होती है उसमें से 30 हाई मोमेंटम कंपनीज लास्ट 6 मंथ और 1 year के रिटर्न्स के बेसिस पे सेलेक्ट की जाती है एडजस्टेड फॉर वॉलेटिलिटी आर सेलेक्टेड राइट एंड देन द इंडेक्स इज गेटिंग रीबैलेंस ऑन हाफ ईयरली बेसिस जब आप 30 हाई मोमेंटम कंपनी सेलेक्ट करते हैं वो कंपनीज का पोर्टफोलियो आप 6 महीने तक कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट 6 महीने बाद अगेन ये प्रोसेस वापस दोहराते हैं और अगेन हाई मोमेंटम कंपनी सेलेक्ट करते हैं सो जैसे कि आपने पूछा कि वेटेजेस कैसे होता है सो इन केस ऑफ मोमेंटम वेट ऑफ अ कंपनी इज कॉम्बिनेशन ऑफ साइज ऑफ द कंपनी विच इज फ्री फ्लोट मार्केट कैप एंड रिलेटिव मोमेंटम जो जब हम 30 हाई मोमेंटम कंपनी सेलेक्ट करते हैं तो उनका मोमेंटम स्कोर होता है उसके साथ साथ हमारे पास वो 30 कंपनीज का फ्री फ्लोट मार्केट कैप भी होता है सो हम हर एक कंपनी में फ्री फ्लोट मार्केट कैप को मोमेंटम स्कोर से मल्टीप्लाई करते हैं और वेट वुड बी इन दैट प्रोपोर्शन सब्जेक्ट टू 5% stock cap at the time of rebalancing. करेक्ट So to simplify, जो वेट होता है स्टॉक का वो कंपनी के साइज और रिलेटिव मोमेंटम स्कोर उसके कॉम्बिनेशन के बेसिस पे होता है बट मोमेंटम और ये जो स्मार्ट बीटा स्ट्रेटजीज है ये क्वांटिटेटिव बेस्ड स्टाइल्स है और क्वांटिटेटिव स्टाइल्स में पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन प्लेज अ वेरी बिग रोल सो इसके लिए हम स्टॉक्स को वेट 5% पे कैप कर देते हैं सो एट रिबैलेंसिंग के टाइम पे किसी भी स्टॉक का वेट मोर देन 5% नहीं होता है बिकॉज क्वांट बेस्ड स्ट्रेटजीज में डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके एंड हाउ ऑफन यू रीबैलेंस योर पोर्टफोलियो मतलब एक स्टॉक 6 month मोमेंटम 6 month every 6 months 6 months so once portfolio is constructed that portfolio is continued for 6 months and after 6 months the same process is again repeated अच्छा ओके 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 सो काफी सारा क्वेश्चंस है ओके मैं किसका क्वेश्चंस लूं ओके ईटीएफ में ठीक है अच्छा भूपेंद्र सिंह का एक क्वेश्चन है इन पैसिव इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू इन्वेस्ट ईदर इन एसआईपी और लंप सम आई थिंक so I would say ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है I would say whether you are investing in active funds or passive funds you should always maintain your asset allocation right करेक्ट and so ideally SIP is the eighth wonder so you should be investing through SIP primarily and whenever Right. markets are trading at attractive valuation and you believe that these are good time to invest at that time you can top up by lump sum investing right
Hmm. So you should combine both SIP and lump sum investment. On longer term, generally we have seen that SIP gives you rupee cost averaging benefit, which means that you are capturing various points of the market. So if Hmm. you are investing through monthly SIP or over Hmm. 10-year period, then you are investing 120 times, right? Hmm. So you are not getting impacted by high price investing at one point in time. So there's a rupee cost averaging whenever you are investing through SIP. So I would say SIP is the best way of investing in equity funds. But whenever markets are trading at attractive valuation after big fall because of various reasons, generally market gives good investing opportunity every now and then. At that time, you can top up by lump sum Hmm. investment as well. When you said SIP is the eighth wonder of the world, आज तक मेरा माइंड में था कि power of compounding is the eighth wonder of the world. I would But say anyway, combination of both. combination of both. Correct. एक Because whenever you are investing in SIP, you are generally investing for very long period. Generally, right. whenever you are investing through lump sum, you get carried away after book in the sense seeing 10-15% profit, you tend to book profits. But whenever you are Yes. investing through SIP, you generally don't look at your portfolio value, you don't look at your returns. So that's why it helps in compounding better as compared to lump sum investing. Correct. एक विक्रम प्रभु जी से क्वेश्चन है, why higher expense ratio charged for Nifty equal weight index in comparison to plain Nifty 50 index, as we see both have got the same set of stocks. Right. See, typically market cap based index funds are having Mhm. low expense ratio because size of the fund is much bigger. The marketing cost is much lower because of sheer size of the fund, right? So because of Right. these, the broad market cap based index such as Nifty, Sensex, Nifty, Next 50, these tends to have lower expense ratio. Mhm. And there are underlying costs whenever you are managing any index. Uh, Whenever fund size is low, because the custodian cost, R&D cost, or small SIPs are also there. So because of which the cost of managing these small size funds is much higher as compared to plain vanilla market cap based funds. So that's why generally Mhm. expense ratio is higher for these smart beta funds as compared to plain vanilla market cap based funds. Okay. एक गौरव मेहता का क्वेश्चन है, सर व्हाट आर द रिस्क इन इन्वेस्टिंग सेक्टोरियल फंड्स एंड हाउ टू मैनेज it if you invest in lump sum? Like right now I feel IT sector will do good in the next couple of years, so thinking to invest in lump sum. So whenever you are So investing in any thematic or sector fund or segment of the market, you should be hmm, aware about the key drivers of that sector for next few years or till हाँ the जी, time based on your investment horizon. So for hmm, example, just taking example of IT, if you believe that IT sector in the sense because all of us are aware that Indian IT companies are getting large part of their revenue by exporting these IT services to US and European markets. If you hmm, believe that the US market would recover faster than what market anticipate, and these Indian IT companies would continue to generate good earnings growth in the long run, in that case, you can invest in these thematic funds or sectoral funds on lump sum basis as well. I would say hmm, these thematic and sector funds hmm, are ideally invested in through lump sum rather than SIP hmm, because at this point in time you believe that this sector hmm, or segment of the market is rightly placed. So which means hmm, that you want to capture today's value and you believe hmm, that in next few years 1 2 3 years or short term this sector will recover mainly because of these levers. hmm, So hmm. I ideally you should be investing in lump sum or maybe you can stagger in few instances rather than investing through SIP in these sectoral or thematic funds. So uh, Absolutely. lump sum is I much think more suitable for these thematic and sectoral funds. I think that is a fantastic insight that you have given. In case of like I am IT or pharma, uh, there are little bit of I think technicalities also involved. You see that now pharma IT sector it has been correcting a lot. Now it has consolidated and showing a sign of reversal probably. So you have to really actively entering and exiting from that thematic sector. Am I right, sir? Correct, absolutely correct. ओके, ठीक है। एक क्वेश्चन है मिस्टर डुल आर्या, सर कैन यू प्लीज कवर टेल अस ब्रीफली अबाउट withdrawal systematic withdrawal system if possible. So
हाँ जी. Okay. So just like SIP, wherein you are investing at various point in time, right? Similarly, in हाँ, case हाँ. of SWP, you are withdrawing at various point in time. So which हुँ, means हुँ. you are taking advantage of rupee cost averaging while investing through SIP. हुँ, हुँ. At the same time, whenever you are withdrawing money, rather than withdrawing at a particular day, you are systematically withdrawing over a longer period of time. So which means हुँ, while exiting also you are capturing various points of the market. So typically हुँ. SWP is much more suitable for investors who need monthly, quarterly cash flows, right? So you हुँ, invest हुँ. for 10, 20 years post retirement because you need monthly, quarterly basis cash flows. So after your retirement, you can withdraw from those funds on systematic manner. But apart from that actual requirement, uh, if you don't know whether this is the right time to withdraw money, you can withdraw through SWP across few months or a few years. ओके. आई थिंक अनिल भल्ला ना मिस्टर अनिल भल्ला, उन्होंने थोड़ा लेट ज्वाइन किए हैं प्रोग्राम को. उन्होंने पूछा है कि प्लीज सजेस्ट व्हिच स्मार्ट बेटा फंड टू इंक्रीज नाउ. तो हम लोग ने काफी डिस्कस कर चुके हैं, बट अगेन भल्ला जी के लिए बता Sure. दीजिए. हाँ जी. See, whenever you are investing in these smart beta strategies, you should be aware about the intricacies of these smart beta strategies, right? Because हम्म. none of the smart beta funds will do well all the time. Depending upon which where the market environment is conducive to for a particular investment हम्म. style, depending upon that, various smart beta strategies will do well going forward. So ideally one should combine one or two or three smart beta strategies because investing हम्म. in a particular smart beta strategy could expose you to risk of that particular factor not performing well for for a particular period of time. So in हम्म. current market environment, I would say one can have combination of momentum and low vol, or because हम्म. typically the geopolitical risk as well as uh, I mean, political calendar is also heavy in next few months because of हम्म. assembly and general election. One can choose to invest in low vol strategy because in the long हाँ. run, that particular style has performed exceptionally well, and at the same time, that is helping you generate stable returns on risk-adjusted parameter basis. That is one of the better performing style in the long run. हम्म. So you could नाउ. choose to invest in low vol or combination of two styles. अच्छा, अगेन यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन है, मैं ही पूछा हूँ कि अगर हम लोग को लगा है कि हाँ भाई, मतलब ये सारा जो हम लोग का पॉलिटिकल इलेक्शंस वगैरह खत्म हो गया है, ओवर हो गया है, एंड देन डिजायरेबल आउटकम, मार्केट इज इन अ स्ट्रांग फुटिंग, तो उस मोमेंट में डू यू थिंक दैट वी शुड शिफ्ट टू मोमेंटम, स्मार्ट बेटा मोमेंटम स्ट्रेटजीज? So typically, momentum is suitable in a economic expansion phase यस. whenever trends are very well established and those हम्म. trends are expected to continue from medium term perspective. So those are the good time to करेक्ट. invest in momentum strategy. Whenever हम्म. uncertainties are much lesser. So as you हाँ. rightly mentioned that uh, maybe once election is over, the हम्म. economic and political stability is much more, that could be better time. So one should be aware about these unstable environment. Whenever you believe that economic environment is going to change going forward, at that time you should invest in different styles rather than a particular style. Correct. So, Sarvaji, we are getting lot many questions actually, but I think we'll have to wrap it up. We are already exceeding our time. But very quickly, I would like to take the questions of Gaurav Mehta. उन्होंने, should we stop the SIP in the fund that are underperforming the benchmark? So please take questions. Also, my doubts are clear. Thanks. Okay. मतलब कोई अंडर परफॉर्म कर रहा है, उसका SIP बंद कर देना चाहिए क्या? एंड मोहित यादव का एक है, निफ्टी 50 इंडेक्स, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स, निफ्टी मिड कैप 150 250 इंडेक्स में लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट कैसे रहेगा सर? ये एक्टिव और पैसिव फंड का कॉम्बिनेशन होना चाहिए क्या? एक्टिव और पैसिव का कॉम्बिनेशन होना चाहिए? ये दोनों क्वेश्चंस Okay, को कंबाइन करके sure. या. So let me answer second question first. यस. So I would say it's active and passive are complementing each other very well. So these are not contradictory style. It's not either active or passive. It's not active versus passive. It's active and passive. So both करेक्ट. styles, active and passive, are playing key role from longer term wealth creation for the investors.
So Mm-hmm. investors should combine both advantage of both active and passive, right? The core Hmm. part of the portfolio could be in passive funds to generate market return. And but Mm-hmm. whenever you believe that certain fund managers, certain styles are expected to do well, you can have some Mm-hmm. investment in some proportion of your investment in active funds or thematic funds, right? Mm-hmm. So one should diversify the portfolio across active and passive funds. It's not active versus passive. Hmm. Coming back to first question, can you Hmm. repeat the just? अंडर कोई फंड अंडर Okay, परफॉर्म कर sure. रहा है तो उसका एसआईपी बंद कर देना चाहिए क्या? Right. See, I would say that would not be the right approach because Hmm. generally we have seen that a particular time, particular style performs well. For example, Hmm. pre-COVID from 2015 to 2020 period, quality-oriented funds were doing much better as compared Hmm. to value-oriented funds. And Correct. post-COVID, we have seen that value-oriented funds have done much better as compared to quality-oriented funds. So Hmm. this performance of these styles keeps shifting from one style to another style every 2, 3, 4 years, right? Hmm. And Hmm. investing in the favored style at this point in time may not be the most appropriate way, right? You Hmm. should be selecting stocks, selecting funds which have long-term track record of generating wealth, and then Correct. you should understand whether a particular fund is either quality focused or value focused, and then you should understand whether what kind of outperformance either value or quality has done as compared to other style of in the market at this point in time, and how Hmm. frequently these styles are changing. So I would say exiting or stopping SIP in funds which are underperforming mainly because style is not in their favor should not be the right approach at this point in time. Wonderful. You should Wonderful. understand quality and value and then choose to invest in either quality or value depending upon which segment of the market is expected to do well going forward, because we Absolutely. have seen that there is very low persistency in performance of funds. It's not that fund which have done well last year will do well this year as well. The persistency in Mhm. performance of either active or these smart beta funds is not very high, which means different styles keep performing well in a particular year. So you should not be investing in the fund which have done exceptionally well last year. It's not that the funds which have done exceptionally well last year will do well this year or next year as well. I think that is a very good insight, Sarwanji. And thank you so much. We had a lovely session. So many insights, so many questions answered. And our viewers are actually asking questions only. So many of the questions we won't be able to answer today. But to like to request that please attend our program every, every Tuesday. We have got Paytm Money Talk. Wednesday, we have got again another Paytm Money Express session where we discuss different concepts. So I'm sure lots of insights from today's session. Thank you, Sarwanji, so much. And also thanks a lot to our viewers. Thank you. Thank you, Neeraj. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye.